हमने ये एक लीग स्टार्ट की थी बांद्रा में, जिसमें बॉम्बे या मुंबई के जैसे हम कहते हैं टॉप कॉर्पोरेट्स या टॉप बिजनेस हेड्स अंडर वन प्लेटफॉर्म आते हैं। वही कॉन्सेप्ट हमने लोखंडवाला में भी स्टार्ट किया है, जहां पर हमारे जो मेन पिलर्स है वो सिमका एडवर्टाइजिंग, मिस्टर फ़हीम बाटलीवाला, और हमारे साथ है फेयरमाउंट कंस्ट्रक्शन, जिनमें आरिफ चूनावाला, समीर चूनावाला, फारूक चूनावाला। हमारी जो कंपनी है बॉल पार्क एंटरटेनमेंट, जिसमें मुस्तकीम शेख, करण टंडन, अकबर खान, दैट इज़ मी, एंड वहाब बारूदगर। हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म दें कि अपने हार्ड डेज वर्क के बाद आप यहाँ पर आके एक अच्छा स्पोर्ट खेल सके जो इंडिया का टॉप मोस्ट स्पोर्ट है। और हमने उसको इस तरीके से कन्वर्ट किया है कि हमने उसको एक अंडर आर्म फॉर्मेट में बनाया है, पर अगर आप लुक और फील देखोगे तो वो एक IPL का फील है। आपको पूरे डगआउट्स है, आपके टीम के जो प्लेयर्स है वो ऑक्शन होते हैं, आपका जो बुफे सिस्टम रहता है वो एज गुड एज एनी अदर रेस्टोरेंट दैट इज़ अवेलेबल इन मुंबई। तो हमने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है बिजनेस हेड्स के लिए, एक अनवाइंड करने के लिए, एक डी स्ट्रेस करने के लिए। और हम बहुत एक्साइटेड है बिकॉज इस टाइम हमारे साथ मिस्टर जॉन्टी रोड्स जुड़े हुए हैं। शायद उनके बारे में जितना भी कहे हम कम है, पूरे वर्ल्ड उनको जानती है एज अ क्रिकेटर। और हम सब कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और हमें स्पोर्ट्स मतलब वी आर पैशनेट अबाउट द गेम। टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आप लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं स्पोर्ट्स को और अगर देखा जाए अपने बिजनेस वेंचर्स के लिए? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बड़े ही होते हैं, क्रिकेट का इतना पैशन है हम सबको था कि ऑलवेज जब हम काम भी कर रहे थे, वी ऑलवेज वांटेड टू प्ले क्रिकेट। सर लोग यहाँ रखे जी, so we always wanted to play cricket all the time, and as time जैसे मौका मिलने लगा, we met अकबर भाई, बॉल पार्क एंटरटेनमेंट, and he said he has a concept with us। बस वो कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, बहुत अच्छा लगा। एक तरीके से क्रिकेट खेलने मिल रहा है, नेटवर्किंग में जितने हमारे पहचान वाले हैं उन सबके साथ खेलने मिल रहा है। It was a pleasure for us, and that's how we managed to start playing cricket that way। Okay, is there any social message related to the event? Like हर बार एक क्रिकेट टीम फॉर्म होती है, एक टूर्नामेंट फॉर्म होता है जी, उसके साथ एक सोशल मैसेज जुड़ा हुआ है। जी, आपका क्या सोशल? हमारा सोशल मैसेज राइट फ्रॉम द स्टार्ट ये है, फिटनेस थ्रू स्पोर्ट्स। हमने वही किया है, क्योंकि आप देखो आपकी एक रोज़ाना ज़िंदगी में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो जिम जा पाए। हमने क्या किया है कि एटलीस्ट हम हर 2 महीने या हमारा 2-2 महीने ये लीग्स चलते हैं, यहाँ पर रोज़ आपको सम सॉर्ट ऑफ फिटनेस मिल रहा है। अगर आप प्लेयर्स को देखो जब प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पर आके वो लोग वार्म अप करते हैं, तो वो बेसिकली एक फिटनेस है। सो आवर आइडिया इज़ फिटनेस थ्रू स्पोर्ट्स, एंड वी हैव स्टक बाय इट, and we are trying to promote fitness as much as possible. We have as I said earlier Mr. फ़हीम बाटलीवाला, जिनके e-gyms भी है, वो खुद काफ़ी फिट है। अगर आप आरिफ को देख लो या फारूक या सैम, करण टंडन, मुस्तकीम, एटलीस्ट ये डायरेक्टर्स हमारे जो है दे आर ट्राइंग टू promote fitness as much as possible। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो यूथ है, हम चाहते हैं कि वो they play some sort of sport, because that is the only way that will keep you away from all the other bad distractions that are there in this world, especially if you look at the drugs and the alcohol part of it. So we are trying to promote fitness through sports, and what better a platform when you have directors of such big companies coming together and promoting it. So that has been the idea. फिलहाल तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है बिकॉज UCB सीजन 2 आज चालू हो रहा है। सो या इट्स वेरी मच एक्साइटेड ऑन दैट, एंड वी हैव अ गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर जॉन्टी रोड्स हु इज गोइंग टू बी विद अस नेक्स्ट 10 minutes। वेरी एक्साइटेड। Just 2 more questions. First question would be, is there any view, like आपके साथ जितने भी युवा जुड़ेंगे आपकी इस टीम में, आप उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरह प्रमोट करेंगे? क्या ऐसा कोई प्लानिंग है आप? नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रमोट करने के लिए है नहीं, बिकॉज ये जो है दिस इज ऑल फॉर मेकिंग पीपल फिट। अगर आप देखोगे यहाँ जितने लोग हैं वो क्या काम से आते थक थका के, एंड दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू इन द नाइट टाइम, तो उन्होंने इसलिए क्रिकेट इसलिए चालू किया है कि दे कैन बी फिट। द मेजर थिंग व्हाट वी वांट टू डू इज मेकिंग पीपल फिट, तो फिटनेस के लिए कर रहे हैं हम ये। आपकी इस टीम में सभी कॉर्पोरेट्स जुड़े हुए हैं, सभी बिजनेस टाइकून जुड़े हुए हैं। व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, इट कम्स अबाउट मेकिंग मनी। That's right. So is this event, is this whole plan related to money? आप इससे प्रॉफिट भी कमाएंगे? सी प्रॉफिट
ज़्यादा कमाएंगे तो हम लोग है नहीं इस चीज़ पे यहाँ पे। हमारा बेसिक फंडा यही है कि हमारे जितने यूथ है, हमारे जितने लोग हैं, वो गलत चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, उनका टाइम बचाने के लिए। सो यू नो फ्री टाइम आई डोंट वांट टू गेट इनटू रॉन्ग थिंग्स, इसलिए हम लोगों ने किया है कि यहाँ आए सब क्रिकेट खेले, फिट हो, जिम जाए, एंड दैट्स द बेसिक प्लान। लास्ट मैसेज टुवर्ड्स द होल यूथ ऑफ इंडिया फ्रॉम योर होल टीम ऑन बिहाफ ऑफ योर टीम। Stay fit, guys. I just want to say, stay fit, enjoy yourself. One life, make the most out of it. थैंक यू सो मच। Thank you. So to start with, I think it's a very exciting day today. काफ़ी मज़ा आएगा because and it's been a very hard work to lead to this day today. It's not been an easy task. As you see, there are so many directors and partners who've been associated in creating what UCB is today. UCB, Ballpark, everybody just Fairmount, everybody just come together in a very good way. And yes, the motive remains fitness. सारे अपने corporate worlds छोड़कर cricket खेलोगे. It's more about fitness. You know, make Mumbai fit. What do you have to say about it regarding the UCB concept and Jonty coming to promote this? So जैसे पहले कहा था कि the concept is where basically the idea is for everybody who belongs to corporate houses to come and unwind and have fun with family, but at the same time let's not compromise on the integrity of the sport. That's always been the concept. And about Jonty Rhodes, I mean, he's been the fitness idol of the cricketing world from 1992 World Cup, and he's somebody who's the most electrifying, exciting fielder on field. So I mean, to have him, a player of his stature here at UCB at an underarm tournament, is just can't express beyond words. So we're just super excited and thrilled to have Jonty Rhodes here with us today. And he himself seems very passionate about the entire game, about UCB, his tips, and his meetings with the captains and team owners. It's been very helpful to take UCB to the level it's gone to at season 2. Thank you. Basically, the main intention, or Arif is a very close friend. We are doing a project together as well. Plus, cricket being the cricket is the life mantra for many people in India. So cricket is the go-get thing basically. So that is the big motivation. So that's about it. So are you yourself passionate about cricket playing? Yeah, I do play cricket. Yeah. So are you part of any team or are you part of? Not right now, but next year for sure. As of now, you're owning your own team in this tournament. Yeah. You could have financed some other projects like a building project, but why you have to get into this cricket? As I said, it's all between friends basically. That's the pure reason, and the love for cricket. That's the being a business person, you are earning such a good amount. By God, you should earn that. And do you have any profit point through this whole concept? Nothing. No profit. Nothing of that sort. A message to the youth of India. To the youth of India. Yes. Be fit, play cricket, be happy, and have a fit mind. Yeah. Okay, fine. Right. Sir. Side, please. Hold, please. I know it took a little while. Well, I'm just trying. Took it to the limit. The only thing is, it's just how it works. You guys had right, proper right. We had we were initially to start that there, but then the rains were the first round, and just introduction of what it is all about. Just the fact that you are here. Sorry, it was still definitely. Sir, can you hold it for 5 minutes? हम कितना भी So how was the trip in Bangalore? just landed an hour ago. And your surfing bit? Oh, Bangalore. So it was small, but it was Hold. Can you hold it? You just just be careful, हाँ यहाँ पर बाहर अंदर कर लो ना, अंदर कर लो, जरा संभालना वहाँ पर, क्योंकि चलो या please That's my son, he's a great fan of
I felt like jumping. doing the same thing. I started jumping. I could have seen any Thanks to him, we have this turf. He's done a great job. He's been with us. Even the previous league, he's been with us, and he's been absolutely helpful. मुझे फोटोज करने वीडियोस करने चलो भाई थोड़ा सा जाऊंगा कहाँ आ गया सर के साथ ले जाओ प्लीज प्लीज साइड में ही नगमा स्टार्ट हाँ मीडिया बैठ कर लग गया Well, UCB is now the Cricket Bash. The league is season 2 and it's growing, which is incredible. I remember at the end of the IPL, my wife and I had a baby born here in Mumbai, and we were staying in one of the hotels, and I could see out across from the gym, we were doing some yoga in the morning, and these guys were bowling the ball underarm. I thought, what are these guys up to? Why can't they hit it? And then they've showed me how much spin they impart on the ball. So I'm a little bit nervous about this evening. What we've seen from a growth point of view, I remember 10 years ago when the IPL started, everyone thought, it's not a big league, nothing going to happen, Mickey Mouse cricket, this is not real cricket. So with the UCB, we've had our auction. Some of the players have got some decent money. The team owners have had to fork out. They want the better players in their sides. And it's a great concept. I think what is so important with regards to cricket in India is that there is such a passion, but it can't just be for the national team. We saw yesterday with New Zealand beating the Indian side. There got to be other avenues for people to get out there and express their love for the game, and this is definitely one of them. So the United Cricket Bash, I think, is a great opportunity to come out after a days. I know how hard people work in Mumbai, in India. Throughout, it's a very hectic economy. People are in the office sometimes from 9 until 7 in the evenings. And what a great release. The game that we all love, we're all passionate about. Cricket is certainly more than just a game in India. It is a passion and not quite a religion. But it's certainly a great way to get out and for the corporates to get involved, get their employees inside. I think productivity is so important in a corporate environment, and you need some sort of exercise. I mean, I'm all about lifestyle, and cricket, as we know in India, is definitely a part of the lifestyle here. So the more people we can get out playing the game of cricket, this is for families, it's for up-and-coming people, it's not just for the international superstars, it's for people. The reason why I started playing cricket was to have fun. I think that's a key element here. It will be that. And how will you guide and mentor the UCB team as such? I mean, in what ways you will give the suggestions or advice? What I will do is be very quiet, because I haven't played cricket for 2003. So 14 years I haven't played any cricket. So I'm going to be very, very quiet. Now I'll be guiding the guys, obviously, with the IPL Mumbai Indians. I do a lot of fielding coaching. And my advice to people, watch the ball, hit it, but it spins like crazy, man. And if you're fielding, if you don't go, you'll never know. So I'm expecting I see the outfield. What a great turf here. I'm expecting to see a few of the guys diving around, eh? Okay, so don't let the ball go past you. Let's be diving for it. Thanks. Okay, mate. Sure, guys. Sure.
No, right here. Only the committee, guys. Only the committee. अच्छा पवन All out, please. All out. All of the guys out. Dastagir. Please, Salman. Musti. Salman. सलमान प्रेस के लिए फोटो चाहिए मुझे हाँ ले मुशी कहाँ जल्दी आ भाई बात ओके सलमान इधर वन फोटो तो पीछे हो ना थोड़ा पीछे आ जाओ भाई लोग थोड़ा वाइड आ जाओ और पीछे तो क्लोज में प्रिंट के लिए फोटो है पूरा वाइड हो गया ओके एवरीबॉडी थम्स अप नाइस अरे Okay, thank you very much. Thank you. In the running room. Off the fence, Dika. Okay? जब खेलेंगे ना तब Let's लोग start. ले लो Let's start. There's been a change in decision, and the committee is batting. We've got अच्छा कैमरामैन लाओ बैठ देना सर We have the all-stars captain. Everyone. Let's guys start everyone. We started the game. Please, we request you all to kindly clear the ground. Everyone. who's opening the journey Yes, Sarfaraz. Run with him. I'll run with him. और ये जो और maybe you don't have to so guys let's get it let's start again guys let's clear the ground if you don't can move the cameras out please thanks guys thank you so much thank you for all your effort thank you for participating in this game kindly please move out.